Hello everyone, welcome back to another video जोटी कि आज आम CDP रो लास्ट यूनिट पढ़ा को जाऊे which is unit 5. The title you can see here, the chapter's name or the unit's name is individual differences. व्यक्तिगत असमानता विषय आम पढ़ा यूनिट 5 रे जोटा कि आम बुक रो लास्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट सेमिस्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो. तो without a further ado, let's start. The first ଆମର content part ଆମେ ଦେଖିପାରିବା from the beginning କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି concept of individual differences. The individual differences जो ନାଁଟା ଆମର ଦିଆହେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସମାନତା ତ ସେଠି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ concept itself ତା ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଆମେ define କରିକି ଲେଖିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ. Individual variation is a universal phenomena. तो इंडिविजुअल वेरिएशन जोटा रही व्यक्तिगत सबू लोक सब अन्य लोक अलग नोबडी इज सेम एवरीबडी इज डिफरेंट एवरीबडी हैज अ यूनिक स्टाइल सबू लोक मानकर गोटे गोटे निजर जो पर्सनालीटी थाए सेटा अलग थाए आउ जनकटू दुईटा लोक केबे भी समान होई परिबा नाही. तो यहाँ आम गोटे यूनिवर्सल फेनोमेना तो सारा दुनिया रे द सेम थिंग कंटिन्यूस. The differences between individuals that separate them from one another and make one as a simple or unique individual is oneself are termed as individual differences. तो जदि हमको क्वेश्चन आसे what do you understand by individual differences बा what is the meaning of individual differences तो हमें कौन लिखिबा this differences the differences between individuals that separate them from one another. जड़े व्यक्ति आउ जड़े व्यक्ति भितर जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत असमानता रहिबो माने गोटे लोक आउ जड़े लोक भला केबे भी समान होई परिबो नाही एंड मेक वन एज अ यूनिक इंडिविजुअल. सपोज जनक पाखे राइटिंग स्किलटा बहुत भल भाव अच्छी वेयर एज आउ जन पाखे राइटिंग स्किल नहीं बट स्पीकिंग स्किल्सटा बहुत भल भाव अच्छी तो दुई जनक भितर असमानता निहाती भाव रही किंतु they both have a separate and unique quality which make them termed as individual differences according to E. Skinner. The Skinner हमारा कौन कहती today we think of individual differences as including any measurable aspect of the total personality. तो आज में जो individuals मानों को देखो चे today we think of individual differences as including any measurable aspect of the टोटल पर्सनालीटी तो टोटल पर्सनालीटी गोटे जो एस्पेक्ट रहे ता भितर ही आम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन करूँ बाछी था. तो ये जान तो चलवा फ्रॉम द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा जोटी कि आम मेंशन होती टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जमती आम सब कंटेंट पढ़ी पढ़ी आसी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बुक ग्रोथ रो को टाइम रे को टाइप्स रही डिफरेंसेस रो को टाइम रे को टाइप्स रही सेम we will go through in this chapter जोथि कि हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत असमानता को हमें केमिति जानिबा तार भी टाइप्स रही छी. फर्स्ट अछि हमारा डिफरेंस इन फिजिकली देखा जीवर जो डिफरेंस थाए सेटा फर्स्ट बताए गोटे लोक आउ जण लोक ठारू केमती अलगा कार हाइट लॉन्ग अछि तो कार हाइट शॉर्ट कार वेट अधिक अछि तो कार वेट कम. डिफर विथ डिफरेंसेस टू other learning ability and the speed of learning जो कि हमें from the very beginning पढ़ी पढ़ी आसी speed of learning टा 6 years by the age of 6 years सब छुआ माने सेम प्रकार जिनस शिखती नहीं क्लास टीचर पढ़ाऊले भी गोटे पिला जदि तार टोटल सपोज टीचर ताको अल्फाबेट पढ़ाऊँ तो क्लास रे 5टा पिला भीतर 3टा पिला थे जो माने कि केवल लेटर्स को बुझुवे फ्रॉम देयर साउंड्स आउ 2टा पिला थे जो माने कि लेटर साउंड को भी बुझुचंती फॉर्मेशन को भी बुझुवे आउ टीचर कौन कहूँ सेटा को भी बुझुवे एंड तांको कलर जो हिसाब से स्ट्रोक्स निया जाउची को हिसाब रे को लेटर केमती कलर फिल कराउची सेटा को भी बुझुवे तो सेटा स्पीड ऊपर डिपेंड करे फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर सेटा भी गोटे छुआ को आ गोटे छुआटर कौन करता है अलगा बोली प्रमाणित करता है. डिफरेंस इन हेल्थ डिफरेंसेस भी थाए जमती कि क्या सपोज ऑस्टियोपोरोसिस होईची से लोकर फिजिकटा से छुआर फिजिकटा केमती आ गोटे पूरा हेल्दी लोक ता फिजिकटा केमती. ओके नेक्स्ट आमे जीवा देखिबा डिफरेंस इन इंटेलिजेंस डिफरेंसटा तो बहुत बड़
रोल प्ले करे इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस रे सब लोगों को इंटेलिजेंस सेम नुहे को टाइम ने को प्रकार नॉलेज को अप्लाई करिबारे रहिता है सेटा समस्त जानि पारंती नहीं difference with reference to their race and nationality caste and creed जोटा कि आम इंडिया रे एबे पर्यंत प्रिवेलेंट होगी रही वेरी स्ट्रांगली ओके तो रेस और नेशनलिटी ऊपर भितर लोक जज करवाटा एबे पर्यंत प्रिवेल होगी रही इन मेनी कंट्रीज इंडिया रे सिना आम सॉवरेन कंट्री हिसाब से रोचे बट द जाति सिस्टम द कास्ट सिस्टम it is still prevalent we cannot exclude it from our lifestyle then people with difference reference to their achievements लोकंगर अचीवमेंट को भी नहीं कि डिफरेंट हम सपोज जड़े गोटे हायर पोस्ट जॉब कर गवर्नमेंट सर्विस वेयर एज अनदर पर्सन हैज डन द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर तो तांको भीतर अचीवमेंट डिफरेंसेस आसे वी कैन से व्हाट दे हैव अकम्प्लिश्ड डिफरेंस इन इंटरेस्ट्स तो कहार इंटरेस्ट आउ जन लोकंग संगे समान नता इट इज वेरी लेस वी कैन फाइंड दैट एवरीबॉडीज इंटरेस्ट इज सेम गोटे क्लास जब 30टा छुआ थे हार्डली 7 ରୁ 8 पिलांकर इंटरेस्ट मिसुथिबो बाकी समस्त इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट थिबो difference in attitude the way we behave the way we show our attitude to the others that also matters a lot that also shows the individual differences from one to the other person difference in motor ability the physically able हवा उन्हें जो motor skills को develop करेगा with time that differs a lot तो इंडिविजुअल गोटे लोक जदि बाय द एज ऑफ गोटे छुआ 3 इयर्स लिखा स्टार्ट कर दौर वेराज 6 इयर्स को पहुँचला पर्यंत भी गोटे छुआ लिखिपार ना तो से आमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखाए फ्रॉम द व्यू ऑफ मोटर स्किल्स क्लियर अबाउट द डिफरेंस फर्स्ट आम देखिले डिफरेंस इन फिजिक नेक्स्ट आम देखिले डिफरेंस रेफरेंस टू द लर्निंग एबिलिटी एंड देयर स्पीड ऑफ लर्निंग तापर आम देखिले डिफरेंस इन हेल्थ then हमें देखिले difference in intelligence then difference with reference to the to the race and nationality people with difference to their achievements okay achievement to difference टा भी देखिले then difference in interests difference in attitude difference in motor ability एबे हमें गोटी गोटी करके सब कैरेक्टरिस्टिक्स को भल भाव डिफाइन करवा सो दैट एग्जाम रे आसिले ताको लिखिबारे हमको किछ डिफिकल्टी रहइबो नाही तो फर्स्ट पॉइंट हमर जेंति थिला डिफरेंस इन फिजिक चलन तो देखिबा डिफरेंस इन फिजिक रे कोन लिखाई छी it refers to the difference in height like tall and short weight like fat and thin simple words रे पूरा डिफाइन है छी डिफरेंस इन फिजिक माने एटा को डिफरेंस को बताउची टॉल एंड शॉर्ट हाइट को या फिर लॉन्ग एंड हाइट को या फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट अदरवाइज फैट एंड थिन लाइक फिजिकल फिगर्स को एक्सप्लेन करूची डिफरेंस इन इंटेलिजेंस डिफरेंस कौन पीपल डिफर विथ रेफरेंस टू देयर इंटेलिजेंस लेवल अमंग द अदर इंडिविजुअल्स तो सब लोगों ब्रेन रो थिंकिंग कैपेसिटी सेम नुहे समस्त इंटेलेक्चुअली सेम भाव डेवलप्ड नुहे डिफरेंस इन अचीवमेंट तो अचीवमेंट डिफरेंस कौन से चलन देखा individuals differ in their achievements in school subjects to their efficiency in learning vocations तो vocational part जोटा जॉब रे हमको हेल्प करे सेटा को लर्न करिबा टाइम रे भी सेटा को लर्न करिबा भितरे भी it shows a lot of difference because individuals differ to their achievement in school subjects also जो school subjects से difference create होची कारो कोटा favorite same it will go on with vocational subjects also difference in attitude individuals differ in their attitudes towards different people objects institutions तो समस्त different attitude रही था जोटी कि हमें देखा को पाऊ तांकर डिफरेंस को जगह एटीट्यूड आसे टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल टुवर्ड्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन रे कार को टाइप रो एटीट्यूड रहे सपोज गोटे वर्क प्लेस रे 5टा लोक काम करछन्ती बट समस्त सेम एटीट्यूड न थाए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन
एवरीबडी हैज डिफरेंट माइंडसेट तो ताको नेकी गोटे ऑर्गेनाइजेशन जो रन करे जो मन को सही डिसीजन मेकिंग रे या फिर वी कैन कंसीडर पॉलिसी मेकिंग रे इशू थाए से डिफरेंस इन एटीट्यूड शो करती डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी it means the control of muscles difference in interest individuals show difference in their interest in different sphere of life ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ different sphere of life ରେ ନିଜ ନିଜର different interests को show କରନ୍ତି difference in learning ability students show difference in learning ability some learn faster than the others जोटा कि मैं आगुरी भी कहती कि किए बहुत जल्दी प्रोसीड कर जाती पढ़ला बेले आउ किए किए पछरे रही जाती आउ किए किए सेम पेस रे लर्न करती डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ओके तो जेंडर बेसिस रे डिफरेंस टा कौन रहइबो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन डिफरेंस बिटवीन women having greater skills in memory handwriting etc men shows greater motor activities like logic skills physics etc तो जेंडर आमर गोटे फिजिकल कंस्ट्रक्ट नुहे जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जोटा कि मेन माने को काम करिवे वुमेन माने को काम करिवे सेटा को सोशल कंस्ट्रक्ट हिसाब रे डिफाइन करा जाई थाए तो एठी भी हम देखुचे वुमेन हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी एंड हैंडराइटिंग जोटा कि हमरो एबे पर्यंत भी प्रिवेलिंग अच्छी जे माने भाबो दैट वुमेन हैव गुड हैंडराइटिंग बट मेन आर हैविंग the physical or muscle strength more than women but this is not true right in some cases it is the opposite but still it creates individual differences in people's set of mind difference in race and nationality the race and nationality the difference to देखिनवा चलंतु different race differ in respect to nature physical and mental traits interest and personalities तो डिफरेंट रेस डिफर करिवे अन्य लोकटार एक्टिविटीज रु अन्य लोकटार मेंटल ट्रेट्स रु बा इंटरेस्ट रु थ्री थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी टा हम कोन चलंतु डिफाइन करना भलो भाबरे Multiple intelligence is a theory that was proposed by Howard Gardner. तो हम ये कंसीडर करि परिबा जे हावर्ड गार्डनर होचन जनक कार मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रो ए क्वेश्चन टा डायरेक्ट आसी पारे व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो बिगिनिंग रे हमको लिखिबार अछि दैट हावर्ड गार्डनर इज द theory maker or the father of multiple intelligence theory. He suggested that everyone has all 8 intelligence that at varying degrees. तो समस्तଙ୍କର ପାଖରେ 8 ପ୍ରକାର इंटेलिजेंस था according to Gardner जोटा कि ସେମାନେ शो करती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ देयर लाइफ या फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ व्हाट आर दे लेट्स सी द थियोरी चैलेंज द ट्रेडिशनल थियोरी तांकर जो नुआ थियोरीटा से आनिले ब्रॉट अप करेले the traditional theory of intelligence that there is one single factor of G for general intelligence that only focuses on cognitive abilities. तो हमरो जो cognitive abilities रहिला सेटा सब बेले जनरल बा ब्रेन डेवलपमेंट जो पावर टा रहिला सेटा सब बेले जनरली कंसीडर करा जाए from the general intelligence. Then comes linguistic intelligence in the A section. This is the ability to read, write, and communicate the words. Okay, what is the ability to read, write, and communicate the words? Linguistic intelligence. Linguistic intelligence माने read करिबा, write करिबा, communicate करिबा words को. Person with this has the ability to learn languages and capacity to use. तो जार linguistic intelligence टा भलो भाबरे डेवलप थिबा या फिर जने linguistically properly कौन थी डेवलप्ड थी ताकि से कौन हुए से तरह नॉलेज को बहुत सुंदर भाव अकम्प्लिश करि पारे थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज तो लैंग्वेज इंटेलिजेंस व लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज मच इम्पोर्टेंट
Then comes logical intelligence. Logical intelligence, this is the ability to analyze problems logically, carry out mathematical operation, and investigate issues scientifically. People with this ability can help to make calculation and solve math problems. The logical intelligence, as the name suggests, logically ଭାବିବା logically କାମଟାକୁ କରିବା ତ ଯୋଉ ଲୋକର ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି ପାୱାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେ କୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିପାରୁଥିବ they can analyze logical mathematical operations को बहुत फास्ट କରିପାରିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ linguistically ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ତା ପାଖରେ linguistic intelligence ଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଯାହାର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ they always crave for mathematical operations ଏମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଯିଏ ଯାହା ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଆବିଲିଟି ଥାଏ କୋଉ ଆବିଲିଟି ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ୍ସ କରିବାର ହେଇଗଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥିଓରିକୁ କରିବାର ହେଇଗଲା ସେମାନେ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଲଜିକାଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଏବେ ଆମର ନମ୍ବର ସି ବା ଥର୍ଡ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି visual intelligence. Refers to the ability. It refers to the ability to think and analyze pictures, space, sense of direction. तो visual intelligence द्वारा थिबो से नियति भाବରେ ଦେଖିକି ହିଁ 90 ରୁ 95% ଜିନିଷକୁ ପରସିଭ୍ କରୁଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଥିବ କାହାର ଯାହାର କି ଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଭିଜୁଆଲ ସେଥିରୁ ତାର जो जिस्ट पार्टटाକୁ से ओनली बाय विजुअल ओनली बाय वाचिंग दे कैन कैरी इट आउट musical intelligence refers to the skill in the performance composition appreciation of musical with help of musical intelligence people have an ability to recognize music and create songs तो जो ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି musical intelligence ଥିବ musical means moving the rhythm anybody who can move with the rhythm by their mind by their soul they are called musically intelligent people because ସେମାନଙ୍କୁ senses से जो था ना figure they can figure it out the music they can figure it out the song they can figure how to create another song and they can also catch the beats तो ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ musically intelligent ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ next question ଦେଖିବା naturalistic intelligence it involves the recognition and classification of the numerous species the flora and fauna the natural ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁମାନେ डिफरेन्शिएट କରିପାରିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷର ଭ୍ୟୁର ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଜୟ ସେ ଭ୍ୟୁକୁ କରିପାରିବେ ତା'ର ସେନ୍ସକୁ ସେମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ they are considered as someone who is natural intelligent if a naturalistic as a person having naturalistic intelligence then comes bodily kinesthetic intelligence what is bodily kinesthetic intelligence this is the ability to use body skillfully flexibly and by using one's whole body or body part of the body to solve any problem or to fashion product तो जहाँ पाखे bodily kinesthetic knowledge थिबो से लोकर fashion sense बहुत भल थिबो because they know how to present themselves by looking great by the body they also have the ability to use their body part in such a way which will show it as a very much important part of their body. Without that, they cannot move. Intrapersonal intelligence. Intrapersonal मैंने हमें जानी चाहिए. It is the capacity to understand own strength, style, and oneself's own desires. So intrapersonal जो हम रहला intra
By the term interpersonal intelligence, we can see that finding your own self, finding the सेंस ऑफ योर ओन सेल्फ। तो अपने अंदर की बात को तुम्हें क्या करना है, पता करना है। वी कैन से दुटा किड्स ना ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ यू कैन ऑल्सो यू हैव ऑल्सो वॉच्ड इन मूवीज मूवी ମାନଙ୍କରେ ବି କୁହାଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ अपने अंदर को खुद को पहचानो राइट। तो ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରାଯାଏ ଯେ ତମର କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ତମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲି। ତ ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ହବ, ବାଇ ଇଣ୍ଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ନିଜକୁ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଟୁ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। This is the ability to understand the intentions, motivations and emotions of other people. ତ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମାନେ ହେଉଛି ନିଜକୁ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ଇମୋସନ୍ସକୁ ବୁଝିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓ କଲଚର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସୋସିଓ କଲଚର କଣ୍ଟେକ୍ସଟର ବା ଆମ ସମାଜର କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଲ୍ ରହିଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସମାନତା ପରେ ବି ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। Children grow up in specific physical, social, cultural, economic and historical circumstances, all of which will influence their childhood। ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ତାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସେନି ଯେ ସେ ସେଇଥିରୁ ଶିଖିଯିବ। ତା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଭରାଇଟି ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ଭରାଇଟି ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ହିମସେଲ୍ଫ ଫର୍ ଦ କମିଂ ଇୟର, ଫର୍ ଦ କମିଂ ଲାଇଫ୍। ତା ଭିତରେ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଟର କରିବ, ଫିଜିକାଲ ହେଇଗଲା, ସୋସିଆଲ ହେଇଗଲା, କଲଚରାଲ ହେଇଗଲା, ଇକୋନୋମିକ ହେଇଗଲା ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ହେଇଗଲା। Then comes research has shown that children's sociocultural context can have a large influence on their development। तो सोशियोकल्चरल तो सोसाइटी को नेଇକି ଯୋଉ ଚଳିବାର ଡିଫରେନ୍ସଟା ସେଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପୁରା ସୋସାଇଟି ମିଳିଛି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, whereas ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି ଯିଏକି ସେ ଚାନ୍ସଟାକୁ ପାଉନି। ତ ଆମକୁ ସେଇ ବ୍ରେକ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସମାନ ଭାବରେ socio-culturally expert ହେଇପାରିବେ to live in a society। Then comes we know the individual, we know the cultural influence, how children develop across different countries। Children develop in quite different ways। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି। There is no doubt in that। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଗ୍ରୋଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ରୋଥରେ ଆଗକୁ ହଉନି କି ପଛକୁ ହଉନି, ଛୁଆଟା ଡେଭଲପ୍ କରୁନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଦ ଗ୍ରୋଥ ହାଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ଡ, ବଟ୍ नो इट इज stagnant for some period of time। again with cultural influence, family member support, that growth again goes on। and also this is a very different type of way for children develop or grow। Development of course involves a process of learning and improvement। Others are there to support them like parents, teachers and siblings। The development टा ଗୋଟେ मतलब we cannot say that development is made in one day। It is a long process। It is a long process which includes family members, other members of the family along with father, mother, grandmother, grandfather, uncle, auntie। The development of course involves a process of learning and improvement, and children can learn when they're ଛୁଆଟେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶିଖିବ when there is somebody who is going to support the person। Then individual develop differences based on cognitive abilities। तो cognitive ability जो ଆମର ରହିଲା brain development जो ability ରହିଲା ସେଠି individual differences କେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। A child with special needs in one who requires same form of special care due to physical, mental, emotional or health reasons। तो ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ ଥାଏ
when he or she is in the childhood period, तो ସେଇଠି special care due to physical, तो special care ଟା जो need करे ସେଟା କାହିଁକି ଆସେ? Because of physical care, mental care, emotional care or health issues ପାଇଁ. Children with special needs are also commonly referred to children as disabilities. ତ ଆଉ ଗୋଟେ difference କ'ଣ ରହିଲା ଯୋଉଠି ଆମର children with special need children ମାନେ ରହିଲେ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ specially treat କରାଯାଏ in the society who have lost a limb due to any reason. ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନିଡ୍ ବି କୁହାଯାଏ CWSN. ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି କମନଲି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ଡିସାବିଲିଟି. A child with a disability, more specifically as one who has physical or mental improvement and need extra care of himself or herself. ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଫିଜିକାଲି ପ୍ରପର୍ ଡେଭଲପ୍ ନଥାଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ହିମ୍ ଅର୍ ହର୍ or else they will never be able to work on themselves. Then types of childhood disabilities and other special needs. ଆମର ଯୋଉ childhood disabilities ରହିଛି ତାର other special needs ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା. According to the National Dissemination Center for Children with Disabilities, types of childhood disabilities are. तो ଆମର ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିସାବିଲିଟି ବିକଳାଙ୍ଗତା ଥାଏ ସେଟା କେମିତି ଥାଏ ଆଉ ତାର କେତେଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଚାଲ ଆଗ ଜାଣିବା. Types: autistic disorder, visual disorder, multiple disabilities, reading disability, mental retardation, learning disabilities, epilepsy, speech and language disability, emotional disturbance, Down syndrome, hearing loss, cerebral palsy, then attention deficit hyperactivity disorder. तो ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ରହିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ରହିଲା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର जोटाकि डिसेबल चाइल्ड थांती तांकमानकर कैटेगरी नॉट फॉर द नॉर्मल people or not for the normal child, but these are the categories we read now are about the children having different disabilities जोटाकि तांकर छुआ समय हुए and it stays with them. Gifted child, तो आम गोटे चाइल्ड को गिफ्टेड चाइल्ड बोली केमती कहवा. गिफ्ट देले गिफ्टेड चाइल्ड कहबे नियति भाबरे someone who is having a special gift of talent. For example, गोटे छुआ अच्छी नर्सरी क्लास रे in the age of 3 or 4 but he or she is able to read very fluently story sentences. तो ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଲେଟର ବା ନମ୍ବର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରୁ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ତା ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ दिस चाइल्ड इज एबल टू रीड जोटाकि 6-7 वर्ष पिलार काम. तो गोटे 4 वर्ष आगुआ जो एक्टिविटीटा गोटे छुआटा करुच्ची इट मीन्स ही इज गिफ्टेड बिकज एई टाइम तो सेतिकी जिनिस तार कैपेसिटी ही नहीं accomplish करिवार. Gifted children are those who demonstrate an advanced ability or potential in one or more specific areas where compared to the others of same ages, experiences, and environment. The specific areas can be, excuse me, in intellect, music, arts, creative writing, mechanical skill, and social leadership. तो जो हमारा गिफ्टेड चाइल्ड रहिबो नॉट ओनली सेटा स्टडी पार्ट रहिबो बट आल्सो अदर एक्टिविटीज को भी लुक आफ्टर करिके एटा को डिसाइड करा जिवो केमती करा जिवो कि इंटेलेक्चुअली किए अच्छी इंटेलेक्चुअली रिटायर्ड तो किए अच्छी इंटेलेक्चुअली एक्टिव तो किए अच्छी इंटेलेक्चुअली सुपर एक्टिव जहाँ कि आम कौन कहूलु एना गिफ्टेड चाइल्ड. ओके नेक्स्ट चलते देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड. गोटे गिफ्टेड चाइल्ड कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स थाए जोटा कि गोटे डिफरेंट चाइल्ड व गिफ्टेड चाइल्ड हिसाब से कंसीडर कर हेल्प करे.
पॉजिटिव एटीट्यूड, ट्रस्ट और दी शार्प मेमोरी जा रहता है, मैच्योर माइंड, अंडरस्टैंड सोशल मेंबरशिप जी कि सोशल मेंबरशिप को वैल्यू करूथबो आ ता वैल्यूटा को भलो भाବରେ कोन करथबो बुझु भी थिबो। कॉन्फिडेंट मोर राइटिंग स्किल रे मास्टरी करथिबो आ बहुत कॉन्फिडेंट थिबो। पार्टिसिपेट इन वन और मोर को करिकुलर एक्टिविटीज गोटे करिकुलर एक्टिविटी को छाड़ी की बहुत गुड़ा एक्सटर्नल करिकुलर एक्टिविटीज जो रही ताको भी कौन कर पारथबो एक्सेप्ट कर पारथबो। फिजिकली बेटर देन अदर तो फिजिकली आउ दुई चार लोकंठू भी से स्पेशल थिबा दरकार जोटा कि गोटे गिफ्टेड लर्नर हिसाब से कौन करेबो कंसीडर करेबो। देन चलो देखिबा fostering creativity among children तो पिलांको भितरे in today's generation after watching multimedia after watching mobile for so much time they have lost interest in improving themselves also fostering their creativity ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ସେଟା ସେମାନେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ not only the social pressure but also the trend चलछि ना without watching mobile we cannot eat हम मोबाइल न देले ଆମେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ so it continues and slowly it kills the creativity among the children तो जोटाକୁ foster ଆମେ କେମିତି କରିବା parents and teachers would be able to contribute scientifically to the creative skills of the children with proper environment and guidance the parents and teacher both मिसिकी पिला को गाइड करिवे scientifically ତାକୁ ବୁଝେଇବେ so that he or she will never feel left out ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ଫୋଷ୍ଟର ହେଇକି ରହୁଥିବ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ ହେଇକି ରହିପାରୁଥିବ। Then let's go to the next question, next section. Children can be given complete freedom in the creative activities. तो ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ନ ରୋକିକି let him or her do so that first thing ସେମାନେ independent ହେବେ second thing ତାଙ୍କ creativityଟା develop କରିବ because ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବାକୁ start କରନ୍ତି they forget what others think so without judging them you should foster instead parents and teachers should be clearing all doubts of the children ତ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ doubt clear କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ children should be taught in classroom by using creative model ତ କ୍ଲାସକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଟେନସନ୍ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉଠି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଫୋଷ୍ଟର ହେଇପାରିବ excuse me that is nearly impossible तो ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା without teaching it there is no class ତ କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତା ହିସାବରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ because after watching real thing or anything which is tangible to hand students show their utmost interest also extracurricular activities are to be conducted extracurricular activity जोटा कि benefit करिवो growth और development रे ताको भी conduct करिवो दरकार self confidence has to be created among students तो पिलांको बार बार प्रैक्टिस करे कि अन्य पिलांको आगे ठिया करे कि तांकर सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करिवा children should be encouraged to write लेखिबा को encourage करेवा excuse me children have to taught always speak truth तो छुआंको सबବେଳେ फोस्टर करेबा सत कहबा पाई सो दैट हमरा एटी फोस्टरिंग हे परिबो पिलांकर मोर एंड मोर ओवर एक्टिविटीज जोटी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहले परे भी तांको यूनिक करेबो तो एटी में जो किछटा चाइल्ड और डिसेबिलिटीज विषय पढ़िथिले ता भीतर किछटा कॉमन अछि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जोटा कि हम समस्त जानि ऑटिज्म गोटे छुआ बार सेम थिंग को रिपीट करिबो आई कांटेक्ट न करिबो आ स्टेबल हिसाब रे क्लास रहि परिबोनी विजुअल डिसेबिलिटीज भी समस्त जानि समवन हु इज विजुअली रिटायर्ड जो माने कि देखि परिबे नहीं मल्टीपल डिसेबिलिटीज माने
बहुत प्रकार डिसेबिलिटी जमती कि हाथ रहीगला गोड़ रहीगला इयर रहीगला नोज रहीगला डिसेबिलिटीज रहिले रीडिंग डिसेबिलिटीज जोड़ा को आम कौन कहू कंसीडर करा जे राइटिंग डिसेबिलिटी को डिस्ग्राफिया हमर मैथमेटिक्स रे जाको प्रॉब्लम रहे ताको डिस्कैलकुलिया स्पीकिंग ओरल स्किल्स रे प्रॉब्लम रहिले दैट इज डिसलेक्सिया द मेंटल रिटार्डेशन रो मीनिंग is none other than someone who is mad or mental who is having brain but cannot use it it cannot be used in a proper way तो सेठी ब्रेन रो काम किछि भी हे पारे नहीं तो से मानु हम मेंटली रिटायर्ड कहवा लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़िबार जाको डिसेबिलिटी थिबो क्लास रे बुझी पार नथबो सेटा को कह जाए देन एपिलेप्सी one organ the use of one organ when the use of one organ does not go as the way it should go speech and language disability जोटा को कि हमें commonly speech therapy कहू ये सब प्रकार जो आम देखिले चाइल्डहुड रे प्रॉब्लम होची डिसेबिलिटीज गुड़ा को होची सब गुड़ा को ट्रीट करा जाई परिबो नहीं जंती गोटे विजुअली पूरा ही डाउन थिबो until the donation of someone's eye he or she cannot see और जार कान करा पिला without जब hearing disability हैला without the help of hearing aid ताको सुबा जीवो नहीं इमोशन डिस्टर्बेंस भी हमें पढ़िले डाउन सिंड्रोम भी पढ़िले डाउन सिंड्रोम रो गोटे मूवी आम समस्त जानते किछि दिन पूर्व रिलीज होता सितारे जमीन पर तो से मूवी रे मोस्ट ऑफ ऑल द मोस्टली 90% ऑफ द पीपल वे ऑफ डाउन सिंड्रोम सेठी हम देखले डाउन सिंड्रोम पिला गेम भी खेलुचंदी डाउन सिंड्रोम पिला मैच भी जितुचंदी तो डिसेबल्स मानकर भी गोटे गेम प्रोग्राम रहे स्पोर्ट्स रो गोटे एथलेटिक पैरा ओलंपिक्स बोली भी हमर रही तो जो कि हम एटा देखा पाऊ जनकर जदि प्रॉब्लम अच्छी with physics still how they will keep their confidence boost up or lit up down syndrome is one of them then हमें next को जीवा देखिवा attention deficit एटा को ADHD को आजे attention deficit hyperactivity disorder जो समय गोटे पिला केबे भी attention देकी बसी पारे नहीं तो आई होप आपण मानक ये चैप्टरटा भल भाव बुझी आसथिबो जे इंडिविजुअल डिफरेंस रो मीनिंग कोन तार कांसेप्ट कोन हम ताको केमती टाइप्स रे डिवाइड करिछे along with that एटा भी देखी जे आज इंडिविजुअल डिफरेंसेस सहित हमें कौन कौन प्रॉब्लम्स फेस करबा को पड़िबो along with that हमें एटा भी देखिबा को पाइले जे हमर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जे देइथिले हावर गार्डनर से केमती 8 प्रकार इंटेलिजेंस को डिफाइन करई छंदी theory of multiple intelligence रे then we got to know learning styles and socio-cultural context of the learning style after that केमती individual difference define करा जाई परिबो cognitive ability रे then types of disabilities in students by childhood period रे को प्रकार रो छुआ भितर डिसेबिलिटी देखा को मिले चाइल्ड विथ स्पेशल नीड किए गिफ्टेड चाइल्ड किए गोटे पिला को गिफ्टेड चाइल्ड आम केमी कहीपर एंड एट लास्ट समस्तଙ୍କର nevertheless the weakness nevertheless the individual differences everybody's activities everybody's creativity should be fostered समस्त क्रिएटिविटी को कौन करबा दरकार फोस्टर करबा दरकार समस्त सब बड़े बूस्ट अप होगी रहा दरकार रादर देन ऑल द थिंग्स दे गो थ्रू नो मैटर जदि गोटे लोक देखी पारनी जदि गोटे लोक कथा भी कहि पारनी बट किंतु तार एक्टिविटी तार एटा सब बड़े फोस्टर होगी रहउथबा दरकार so that he or she will never be feeling left out in the section. If anybody wants the note, note darkar achi, you can contact on the given number here so that you will get the note through WhatsApp. Thank you. I hope you understand the chapter properly. Catch you in the next video.